Today our topic is pitfalls in technical writing. So there are some dangers or perils or difficulties or problems you need to avoid while communicating or writing uh, as far as technical writing is concerned. So let me share the screen with you. Here we are. Alright, so topic is pitfalls to avoid in technical writing. So there are some dangers, there are some problems, there are some, you can say, perils or difficulties you need to avoid while writing technical communication. So let's explore this topic. Okay, so there are basically these are the pitfalls. For example, you avoid acronyms and abbreviations. So try not to use acronyms and abbreviations in your technical writing, and avoid jargon and idioms, avoid figurative language, and avoid sexist language. So these are four topics or headings or subheadings we will be discussing in our today's lecture. So let's explore them one by one. As far as the first topic is concerned, the first subtopic is concerned, avoid acronyms and abbreviations. We have done that topic in the previous lecture in detail, so you can consult or see previous chapter notes or slides in order to cover this topic, avoid acronyms, abbreviations, where we have defined acronyms, what is acronyms, what is abbreviations, and what are different rules, and how we made acronyms and abbreviations and the impact on technical writing. ठीक है, हमने इसको डिस्कवर किया था, इसको पढ़ा था. ठीक है. So now let's talk about uh, the next topic, the next subheading, that is avoid jargons and idioms. All right. So here are some idioms and jargons are given. Jargons, as we have discussed in the previous class, jargons are technical terms, technical terminologies of a specific field, and that they those words and vocabulary or phrases are not common to the people. So only special people, only people belong to that category or that field can understand the words or expressions you're using. So make sure whatever you jargon you are using, that must be understood by the listeners or the readers. So idioms भी हैं एक लैंग्वेज के अंदर जो है वो आप कह लें कि एक मशहूर बात होती है, idioms होते हैं, ठीक है, जिनका एक सर्टेन मीनिंग होता है. सो फॉर एग्जाम्पल उर्दू में होता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, इस तरह की चीजें. तो ये idioms की एग्जाम्पल है. तो सेम इज द केस विद इंग्लिश लैंग्वेज. देयर आर वेरियस idioms in English language as well. For example, a ballpark figure. So if you have used these words and especially this phrase ballpark figure, so the reader will might get distracted. Okay, what's the meaning of ballpark figure? So he might get confused and he couldn't, and there are chances that he will be unable to understand what are you talking about, because you have used a jargon or idiom that is difficult to understand or comprehend. Belt tightening, for example, bite the bullet, brownie points, buck stops here, crunch time, dog eats dog word, drum of business, eye on the fries. So these are some of the jargons or idioms. So if you look at these idioms or jargons, to figure out their meaning, it's difficult to understand, to crack or to explore the meaning of these phrases or jargons is difficult. So when you are using these jargons and idioms in your language, in your technical communication, so the person who is receiving your letter or technical communication, he won't be able to understand you. And you know, the primary purpose of your communication or your written communication is that your point should be clear and concise, that another person can understand or comprehend your point of view.
So if you are writing technical terms or if you're using technical and complex language in your technical communication, so how your reader or listener would understand your point of view. So it would be very difficult for him or her to understand your technical writing. So what you all you have to do is just avoid using these jargons and idioms and technical language in your technical writing. All right, so avoid using these expressions. Try simple expression instead of using these expressions. So let's explore them one by one. For example, ballpark figure is a rough numerical estimate. Okay, can you give me a ballpark figure? A ballpark figure का मतलब है rough estimate. ठीक है, बेल्ट टाइटनिंग का मतलब क्या है? रिडक्शन इन स्पेंडिंग. ऑलराइट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या? डिसाइड टू डू समथिंग डिफिकल्ट. Buck Buck stops here. Someone who takes responsibility of his decisions. All right. So these expressions or idioms, all right, are uh, difficult to comprehend or understand. Similar is the case. Same is the case with these expressions as well. For example, crunch time, dog eat dog word, drum up. So these are the phrases or idioms that have specific meaning or information. So when you are using these terminologies or jargon idiom in your technical writing, what are you doing? You're just making your writing complex and incomprehensible for your reader. So आप अपनी राइटिंग को ऐसा कर रहे हैं कि आपके रीडर को समझ नहीं आएगी. So the first thing is, the first pitfall you need to avoid is stop using jargons and idioms in your technical writing. Be concise, be specific, try to use simple vocabulary or language that must be understandable for your reader. Because if your reader is not understanding your point of view, what's the purpose of writing? अगर उसको समझ ही नहीं आ रही, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही, तो आपकी इतनी हाई फ्लॉन हाई फाई और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखने का फायदा क्या होगा? ठीक है. Okay, so then there is another point. If you are using slash marks, all right, so avoid using these. So you make sure that you are using those slash marks properly. For example, or slash and है, for example, and का मतलब है जी दोनों दो both of, ठीक है, things, first and second. इसका मतलब है कि we are considering both options. दोनों चीजों को हम कंसीडर कर रहे हैं. So when there is a conjunction and, so you should aware of that. Okay, and का मतलब क्या कि we are combining two things. We are taking two options and we are weighing up and we are considering two options or measures. तो हम दोनों चीजों को कंसीडर कर रहे हैं. और अगर और आ जाए, ओ आर और या स्लैश लिखा हो, इसका मतलब है वी आर कंसीडरिंग ओनली वन ऑप्शन. Between two options we are considering only one option. ये आपको पता होना चाहिए. तो when you are using a slash and or words or phrases, you must understand how they apply and what kind of meaning they convey. If we put slash or if we put or if we put and, सो इसका आपको इस्तेमाल का पता होना चाहिए कि अगर आप लेट से एंड कहना चाह रहे हो, उसका भी आपने स्लैश डाल दिया है, तो वो तो डिफरेंट मीनिंग कन्वे करना शुरू कर देगा. ठीक है. Alright, so when you are using the word and or slash, so make sure you are using them appropriately and you're not making any mistake. Alright, next is avoid humor and pun. Uh, Humor and pun are, you can say, jokes that you crack and you write in your writing. Alright, that has double meaning, that can offend your reader. आप मजाक में कोई बात कह देते हैं, कोई ऐसी बात कह देते हैं जो आपके रीडर को ऑफेंड कर सकती है. एक ऐसी बात जिसके दोहरे मतलब होते हैं. ठीक है, ऐसी बात हम करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर भी. तो ट्राई टू अवॉइड दिस ह्यूमर एंड फन. इस तरह की लैंग्वेज आपने टेक्निकल कम्युनिकेशन में नहीं करनी है. जोक्स एंड ह्यूमर आर नॉट यूनिवर्सल. फॉर एग्जांपल, आप जो जोक कर रहे हैं अपनी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है,
ठीक है, that is not acceptable in another culture or another country, so don't use it. आप इस्तेमाल ही ना करें. For example, a bicycle cannot stand on its own because it is too tired. Now, look at the language कि बाईसाइकिल जो है वो खुद खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वो दो टायरों वाली है. अब देखें यहाँ टू टायर्ड का मतलब क्या है कि वो बहुत थकी हुई इसलिए खुद खड़ी नहीं हो सकती है. अब देखें ये मजाक किया गया है, एक ह्यूमर क्रिएट किया गया है, एक फन क्रिएट किया गया है. ठीक है, तो इस तरह की लैंग्वेज से भी आपने अवॉइड करना है अपने टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर. इस तरह का ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी है. क्योंकि in business environment when you are communicating, when you are writing and you are writing on a piece of paper, ठीक है, and it will be recorded, it will be a recorded और record बनेगा वो आपका later on. तो इस तरह के sentences, phrases और pun और humor का इस्तेमाल करके you are downgrading your personality, your professional attire, your professional status आप उसको downgrade कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, you're spoiling yourself. ठीक है, तो इस तरह की चीजें. ऑलवेज ट्रस्ट अ ग्लू सेल्समैन, दे टेंड टू स्टिक टू देयर वर्ड. कहता है कि जो गिल्लू बेचने वाले होते हैं ना, जो उनके साथ उन पे ट्रस्ट करें क्योंकि वो चीजों को अच्छा जोड़ते हैं या अल्फाज पे पूरा उतरते हैं. मतलब अब ये एक पन एक जो है ना वो किया गया है, ह्यूमर क्रिएट किया गया है. तो इस तरह की चीजों से भी आपने अवॉइड करना अपनी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर. नेक्स्ट कम्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अवॉइड फिगरेटिव लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल, हमने पहले बात की थी कि ये जो इडियम्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, जो फिगरेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस डबल मीनिंग और वेरियस मीनिंग, ठीक है, जिनका एम्बिगुअस मीनिंग भी होता है, ठीक है, कंफ्यूज कर सकते हैं रीडर्स को. इस तरह के अल्फाज लिखने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अ गुड डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस. ठीक है, अब इस तरह की चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं है. बूट अ जॉब, ठीक है, हिट अ होम रन, ये फिगरेटिव लैंग्वेज है. ठीक है, ये जो है वो इसके अंदर हमें जो पेरेंट्स में जो लफ्ज नजर आ रहे हैं उनका मीनिंग डिफरेंट है, और जब हम इनको कंबाइन पढ़ेंगे तो इनका जो सेंस है दैट विल बी टोटली डिफरेंट. तो इस तरह की चीज, इस तरह की जो फ्रेजेस हैं, इस तरह की जो फिगरेटिव लैंग्वेज है, उसको अवॉइड ही करना चाहिए टेक्निकल राइटिंग के अंदर. Okay, then comes dates and time. So when you mention dates or time, so you should be aware of the different formats of time and dates or different time zones that working in the world. For example, uh, day, month, year. ठीक है, that format is followed by UK, and what uh, while month, date, and year is followed in USA. So for example, if you are writing 5/3/2020, so अगर आप ये लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यूके कहेगा यूके के मुताबिक ये कौन सा महीना होगा, मार्च का मंथ होगा, मार्च की 5 तारीख होगी. लेकिन यूएसए के यहाँ क्या होगा, यूएसए के यहाँ ये जी मई की 3 तारीख होगी. ठीक है, यानी डेट एक ही लिखी हुई है, क्योंकि उनका डे पहले आता है यूके में, तो वो इस